We start the recording now. Also, yeah. Okay. So one of the main differences is that uh, when you take the AND operation between a set A and its complement, the result is not uh, an empty set, okay, or an empty membership function, or so that is primarily one of the differences that we have with respect to fuzzy. So how do fuzzy sets or fuzzy linguistic variables and can be interpreted? For example, you can see on this slide, you have got a membership function for young, okay, and the age of a person is 23. So you can see here, okay, you can find the membership value of this person having age 23 with with on the y-axis, which is primarily giving you a value of 0.8. So that means that this person with an age of 23 is having a membership value of 0.8, and the 0.8 is very close to 1, where 1 stands for a person who is absolutely young, right? So that means that this person is very close to being a young person. Okay. So as the membership value reduces, okay, so as you move down this slope, the membership value reduces. So because of that, the membership value or the strength of the membership value of a person uh, as the age increases reduces, right? So a person of this age, let's say 27, let's say, has may have a membership value of a very less order, and we can say that it could have a membership value of 0.1, right? And 0.1 would mean that the association with young is actually very low, and it would ultimately come to 0 when you reach this point. Okay. Acha, these question marks here, this is representing belong to symbol. Okay. So this is basically an issue because इसमें कुछ symbols जो हैं वो appear नहीं हो रहे, लेकिन this question mark and this question mark here, and sorry, not this one, but this question mark here, that's belong to symbol, and this one here, ये वाला जो है, that is x is greater than and less than. Okay, so that's the universe of discourse. ठीक है, तो ये टाइपो नहीं है, प्राइमरली ये पावर पॉइंट के सॉरी वर्जन का फर्क है, तो इस वजह से ये सिंबल्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा. So I'll correct it and then upload it again. Okay, so you need not to worry about this. Okay, so this is what is a fuzzy membership value means of a given universe of discourse. So here the universe of discourse is comprising of different people of different ages and that is what is being sorry, being represented on the y-axis, or sorry, on the x-axis, and on the y-axis you have the membership value, right? Okay. So for a given value, you can have a membership value of that particular person. So every person would have a membership value in this set, which is the set of young people. Okay. And after this point, the membership value goes to 0. Before this point, the membership value is 1. That means that the person is absolutely young. And here in this region, the value reduces as the age increases. Okay.
So ये definitions थी जो last time हमने discuss की थी, तो I'll not go over these definitions again. We discussed different operators on fuzzy sets or fuzzy linguistic variables. So union, which is another way of saying the AND operation. So here you have the union operation, which is another way of saying AND operation. Sorry, OR operation. So this is OR operation. Okay, union. So if you have two sets, then you can find out the union or the OR operation between these two, either by finding the maximum value of the membership of these two sets, or you can find the OR operation through this formula. So both of these are representing the same operations, okay? But they may result in different values, right? They may result in different values, but both of them are giving you the OR operation. So there are numerous different ways of implementing the OR. The most common of all is to take the maximum value, right? And on the right hand side, you will find the intersection, which is also called the AND operation. Okay. The AND operation, here again, there are two different ways of implementing AND operation. One, the most common is through the implementation of the min operation. Okay. Or you can apply this, right? The second one, which is shown on the right lower corner of the slide, this one, okay, which is the product operation. ठीक है, so product को भी use कर सकते हैं and को implement करने के लिए, और आप min को भी use कर सकते हैं and को implement करने के लिए. तो ये दोनों चीजें आप कर सकते हैं, right? Okay. So अगर आप max use करेंगे तो ये जो red shaded area, this will be the output. अगर आप निचले वाला और ऑपरेशन यूज करेंगे तो दिस इज द आउटपुट ऑफ द और ऑपरेशन ऑफ कंबाइनिंग द टू फॉर द सेट्स. अगर आप मिन ऑपरेटर यूज करते हैं फॉर एंड, देन दिस रेड शेडेड एरिया इज प्राइमरीली रिप्रेजेंटिंग द आउटकम, and in case of product you will find that you will again get a small triangle if you are using the product operation. Okay, remember the membership functions that I'm showing you here, they are triangular membership functions and they could have multiple shapes. So as the shape changes, the outcome of the operations would also change. Okay, so you have to keep this thing in mind. Okay, complement is 1 minus the membership value of a given set, right? So this is primarily the negation. So in case of classic logic, if you have the complement between A and its negation, the OR operation between A and A's negation, the answer in case of standard logic is always 1. And in case of the intersection between A and A naught, the answer is always 0. Okay. So that's the case in case of standard logic. But in case of fuzzy logic, this does not hold. Classical logic mein this holds, lekin fuzzy logic mein this doesn't hold. So let's say the membership value of A is 0.6 और इसकी जो negation होगी वो 1 minus 0.6 होगी, which is 0.4. तो अगर मैं इन दोनों के ऊपर अब AND operation लगाता तो I'll have to take the minimum value, and the minimum value comes out to be 0.4, which is not 0, which is represented here. और अगर मैं OR operation इन दोनों में लगाता हूँ, the outcome is not 1, it's 0.6. यहाँ पे मैंने मैक्स ऑपरेटर यूज किया और के लिए, और यहाँ पे मैंने मिन ऑपरेटर यूज किया एंड के लिए. सो क्लासिकल लॉजिक के अंदर ये वैल्यू जो है वो एक्चुअली 1 होनी चाहिए थी, और ये वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू, दिस शुड हैव बीन 0, लेकिन ऐसा नहीं.
Okay. So even if you take so that means that there is still some commonality between A and its complement, which is not the case in case of क्लासिकल लॉजिक. तो ए और ए की नेगेशन के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं. यहां पे वो ये कहता है फजी के अंदर कि देयर इज सम कॉमनैलिटी बिटवीन द टू. राइट. आई होप दिस इज क्लियर. Right, if it is clear then I'll move on, because this actually um, gives you an insight into how fuzzy logic actually operates. Ji, is it clear, Ji? Okay, great. Let's move on. अच्छा, फजी रिलेशन क्या है? यहाँ पे भी फजी रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, and fuzzy relation, I'll just write down here, a fuzzy relation is primarily when R belongs to X cross Y. So that's actually the product of, or the cross relation between two fuzzy sets. Okay. So it's actually a cross relation between two fuzzy sets. That is what is called a fuzzy relation in this particular scenario. ठीक है. तो फजी रिलेशन के अंदर fuzzy relation के अंदर what is this fuzzy relation means? Okay, or let's first define what a standard relation would mean. Standard relation would mean that if X is related to Y, okay, then the output is 1, otherwise the output is 0. So fuzzy relation की जो हमारे पास जो possible outputs आ सकती हैं वो 1 और 0. So X and Y are related. X and Y may not be related, right? So this is what a standard or a classical logic would mean. But in case of a fuzzy relation, this also changes. The relationship between X and Y would also have a membership value. That means that this would also have a strength. So we can say that X and Y are related with a strength of 0.7 or 0.8 or 0.1 or 0.9. So this would mean that X and Y have some strength of relation, or X and Y are related through a certain strength. Okay, that strength of relation can be defined on a scale of 0 to 1. Right? So a fuzzy relation R belongs to this domain X cross Y, such that the membership value of the relation, or the strength of the relation M, represented by M, belongs to an interval 0 1. ठीक है. तो ये जो straight brackets हैं, these are representing the interval. Or in case of the classical relation, these straight brackets change to curly brackets. ठीक है. और curly brackets का मतलब ये है कि या value 0 है या 1 है. So these are the two discrete values that are possible. Otherwise ये दोनों values possible नहीं. तो relationship between two variables X and Y can also be expressed in terms of fuzzy membership value. Okay, and this is a very important concept, and we'll see later on कि इस concept का क्या फायदा है. Right? Okay, here is an example of a fuzzy relation. So let's say we have weather here. So it could be rainy, it could be cloudy, and it could be sunny.
So you have this as one variable. Let's say we can call it variable X, which is representing the type of weather that you have, and then Y is representing the type of activities, right? In standard logic क्या होगा? Standard logic के अंदर people taking sun bath obviously would have a zero relation. If they are not related, then rainy and sun bath would have a value of zero, right? Similarly, cloudy and sun bath could have a relation zero, and that's what happens in case of classical logic. Bicycling would have, let's say, a membership value of 1 with sunny, and nothing else is possible. But in case of fuzzy relation, in rainy season, people could do bicycling, and that means that this would have obviously a lesser relation, a relation that is of lower strength, but the relation could still be there. So we can assign a fuzzy membership value to this relation, and that could be, let's say, 0.2. In case of standard logic, यहाँ पे 0 आना चाहिए, ठीक है? तो जो strength of the relation है, that cannot be defined in classical relations. Okay, so यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, the strength of the relationship between sunny and camping is 0.7. Right? और अगर क्लासिकल लॉजिक होता ये 0.7 पॉसिबल नहीं था, यहाँ पे या 0 आता या 1 आता, तो probably 1 आता है, right? So this is actually the X variable, and this is representing the Y variable, and then this matrix here is representing all the possible combinations between X and Y. Right? Any questions on this so far? Gee, is there any question on this? Okay. So let's move on. So this is what a fuzzy relation is. Okay. So now let's combine different fuzzy variables. Well, let's define a linguistic variable having different linguistic terms associated with it. For example, you have temperature, and temperature could be divided into 3 categories. You could have cold temperature, warm temperature, hot temperature, right? So this membership function here, the starting one is representing the membership value, the membership function for cold. This one is representing the membership value for warm, and this one is representing the membership value for hot. So let's say if the present temperature is 18, so you'll have somewhere a point somewhere here, and I can draw a line here, okay, and this cuts the warm membership function at this point and cold membership function at this point, and then from here you can find the membership value for both the cold temperature and for the warm temperature. So that means that at this particular temperature, it has an association. This temperature has an association with cold as well as warm, but the strength of association with cold is higher compared to the strength of association with warm. Right? So similarly, अगर आपका temperature इस region में fall कर रहा है, तो this would have a membership value of 1 with warm.
और अगर आपका टेम्परेचर इस रेंज में फॉल कर रहा है तो देन इट वुड हैव अ मेंबरशिप वैल्यू इन हॉट as well as a membership value in warm, but the strength of membership value of hot is much higher compared to the strength or the membership value with the warm. ठीक है, तो वर्टिकली जहाँ पे वो कट करता है किसी भी मेंबरशिप वैल्यू को, मेंबरशिप फंक्शन को, वहाँ से यू कैन डिटरमिन द मेंबरशिप वैल्यू, राइट? Okay, so this is when you have multiple fuzzy sets associated with a linguistic variable. These are also called the linguistic terms. So temperature, cold, warm, and hot. These are the linguistic terms that are associated. Okay, now let's see uh, how a fuzzy rule looks like and what is the shape of a fuzzy rule. So here is an example of a fuzzy rule. And what is this fuzzy rule saying? It's saying that if the temperature is cold, so you have temperature is cold, oil is cheap, then heating is high. Okay, then heating is high. So what is this representing? Temperature is cold. This is representing a linguistic description of temperature. Oil is cheap, linguistic description of oil prices. Heating is high, that it's again a linguistic description of heating. Whereas previously अगर आप previous rule base को देखते हैं या expert systems को आप देखते हैं तो वहाँ पे ये possible नहीं, वहाँ पे आपको कोई range देनी होती, तो आपको ये कहना पड़ता कि if the temperature is between let's say 0 degrees and 20 degrees तो फिर then and the oil prices fall in this bracket, then heating falls in this bracket, तो वहाँ पे आपको temperature ranges देनी होती है. यहाँ पे आपने क्या किया कि आपने टेम्परेचर रेंजेस नहीं दे रहे, आप टेम्परेचर की लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन दे रहे. सो यू कैन राइट डाउन रूल्स इन दिस फॉर्म एंड दैट इज द रियल स्ट्रेंथ ऑफ फजी, क्योंकि इस तरह से रूल्स को डिस्क्राइब करना इज वेरी क्लोज टू हाउ ह्यूमंस एक्चुअली थिंक. So that's why we can say that fuzzy rules are primarily representing the way a human reasons about certain facts. Okay, so it is a more valid or a more closer representation to human reasoning. Okay. Okay, so these are the linguistic variables. Temperature, heating, and oil are the linguistic variables. Cold, cheap, and high are the linguistic terms or the linguistic values of these variables, right? So cold is the linguistic value or linguistic term associated with temperature. Cheap is associated with oil, and high is associated with heating, right? Okay. Okay. So now here is a fuzzy relation that is present. Okay, so again a fuzzy relation that is associated with oil of let's say different linguistic variables. So you have temperature and oil prices. Okay, so temperature and oil prices के दरमियान आपके पास जो है वो एक fuzzy relation exist करती, ठीक है. And this table is representing a fuzzy relationship between the two. ठीक. Acha, so on x-axis you have got, let's say what, sorry, on this side you have got the oil prices, and on this side you have got the temperature. And as we discussed in the previous slide, your rule oil prices and temperature to heating. So this table here is representing 9 different rules. Okay, and what is the first rule? The first rule is that if the temperature is cold and the oil prices are cheap, then heating is high, right?
So this table here is actually representing what? This table here is representing your output, right? So this is your output that you have got here in this table. On one side you have the oil prices, on the other side you have got temperature. So these are the different rules, 9 different rules. So another rule is that if the oil prices are expensive and temperature is cold, then the heating is medium, right? So these are the different rules that can be represented in terms of fuzzy a fuzzy relation or a fuzzy rule base. So this is primarily the rule base that is associated with fuzzy logic. ठीक है? So इन rules के साथ आपने inferencing करनी है. So let's say if someone says के इस वक्त oil prices जो हैं वो $25 और temperature इस वक्त 21 degrees, तो heating levels क्या होने चाहिए? So you can determine it from here. लेकिन उसको डिटरमिन करने के लिए what you'll have to do is that you will have to draw the membership or associate membership functions with cold, warm and hot temperatures. Similarly इसके लिए भी आपको oil prices के लिए भी fuzzy membership functions define करने पड़ेंगे और फिर heating के लिए भी आपको fuzzy membership functions define करने पड़ेंगे. And then you can reason about various given inputs, right? Okay, so this is rule number 1. I've already told you that if the temperature is cold and oil price is cheap, then heating is high. Then you can have another rule: if temperature is hot and the oil prices are normal, then the heating is low. ठीक है, तो similarly आपके पास जो है वो मुख्तलिफ आ सकते हैं. So if you remember, in case of expert systems also, and in case of standard rule-based systems also, you have a rule, you had a rule base, ठीक है, or a knowledge base. So again here, you will have a knowledge base in case of fuzzy rule-based systems. और knowledge base में क्या होगा? Knowledge base में आपके पास linguistic description of variables, which is represented by this diagram here. This is the linguistic description of temperature. और टेम्परेचर की तीनों कैटेगरीज को हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे ये रेंजेस हमने डिफाइन कर दिए. तो लेट्स से कि ये यहाँ पे क्लोज होता है और ये यहाँ पे क्लोज होता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ से पीछे टेम्परेचर जो है वो कोल्ड होगा, लेकिन जैसे ही वो इस टेम्परेचर को आप क्रॉस करते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ कोल्डनेस एक्चुअली स्टार्ट्स रिड्यूसिंग और यहाँ पे आके जीरो हो जाएगी. तो जैसे ये स्ट्रेंथ एक मेंबरशिप लिंग्विस्टिक वेरिएबल में रिड्यूस हो रही है, दूसरे में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज देयर इज एन ओवरलैप. और अगर ओवरलैप नहीं होगा तो देन देयर इज अ क्रिस्प बाउंड्री बिटवीन दीज टू लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स. तो यहाँ पे क्योंकि ओवरलैप है, इस वजह से ये क्रिस्प बाउंड्री नहीं होगी, दिस वुड बी अ फजी बाउंड्री, राइट? तो सिमिलरली एक ओवरलैप इधर एग्जिस्ट करता है बिटवीन दीज वेरिएबल्स, एंड दिस इज अगेन नॉट अ क्रिस्प boundary here, right? Okay, so that's actually is what knowledge base would be. So knowledge base would contain all the possible rules. That means your fuzzy rule base जो मैंने आपको पिछली slide में दिखाई, that would be contained in the knowledge base. One. Second, it would contain the linguistic description of all the variables that you have. कि cold का membership function किस shape का है, warm का कितना है, उसमें overlap. So all these things would be present in your fuzzy rule base, okay, or knowledge base. So let's say कि आपने fuzzification या fuzzy inferencing आपने start क्या करनी है. So there are multiple steps that are involved in how to use a fuzzy rule based system. ठीक है, तो fuzzy rule based system. So first करें, आपने fuzzy rule based system define कर दी in the form of that table which I've just shown you previously, और आपके पास एक knowledge base exist करती है. Then for a given input you will have to fuzzify your outputs, your inputs.
फॉर एग्जाम्पल इफ समवन सेज दैट इस वक्त टेम्परेचर 15 डिग्रीज है और ऑयल प्राइसेस जो हैं वो $13 पर बैरल, सो व्हाट वुड बी दी हीटिंग लेवल्स? तो सबसे पहला आपने काम क्या करना है, फजीफिकेशन. एंड व्हाट इज फजीफिकेशन? Fuzzification means that you convert your given values into your membership values. So you determine the membership value for a given input. So temperature 15 है, तो यहाँ से आपने फाइंड आउट करना है कि इसका कोल्ड में मेंबरशिप वैल्यू इसकी क्या है, फिर वार्म में इसकी मेंबरशिप वैल्यू क्या है, और फिर हॉट में इसकी मेंबरशिप वैल्यू क्या है. सो इफ आई गो बैक टू दिस स्लाइड, तो यहाँ पे 15 डिग्रीज इज समवेयर हेयर, लेट्स से, ठीक है, 15 डिग्रीज मे बी लेट्स से समवेयर हेयर. ये अगर 10 है तो दिस वुड बी 15 डिग्रीज समवेयर हेयर, सो यू ड्रॉ अ लाइन हेयर. तो यहाँ पे आप देखेंगे 15 डिग्रीज वार्म को भी कट कर रहा है और कोल्ड को भी कट कर रहा है, तो दैट वुड मीन दैट इट वुड हैव मेंबरशिप वैल्यू इन बोथ कोल्ड एंड वार्म अकॉर्डिंग टू दिस लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन. लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ कोल्ड का मेंबरशिप वैल्यू दी, और कोल्ड की मेंबरशिप वैल्यू जो है ना, इफ यू हैव अ ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन, तो फजीफिकेशन प्रोसेस ये होगा कि 15 डिग्रीज के अगेंस्ट जितने भी टेम्परेचर के लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शंस हैं उसमें उसकी मेंबरशिप वैल्यू को आप डिटरमिन करें. तो कोल्ड के केस में मेंबरशिप वैल्यू जो है वो शायद 0.5 आए, लेट्स टेक दिस एन एग्जांपल. और अगर फर्ज करें वार्म यहाँ पे कहीं पे है और हॉट या हाँ हॉट यहाँ पे कहीं पे है, तो 15 डिग्री जो है वो सिर्फ कोल्ड में मेंबरशिप वैल्यू है, हॉट में भी नहीं है और वार्म में भी नहीं है. तो 0.5 इज primarily the membership value associated with 15 degrees in cold range. So this process is called defuzzification. ठीक है, so you find for a given input you find the membership value. Similarly oil cheap की बात हमने की, oil cheap में 13 बैरल अगर आपके पास इनपुट है तो this could have a membership value also in cheap. सिमिलरली ज़रूरी नहीं है कि किसी एक लिंग्विस्टिक वेरिएबल के अंदर इसकी मेंबरशिप वैल्यू हो, मल्टीपल लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स, मल्टीपल लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑयल प्राइसेस के अंदर इसकी मेंबरशिप वैल्यू हो सकती है. लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक मेंबरशिप फंक्शन के साथ उसकी फजीफिकेशन प्रोसेस बताया गया. तो व्हाट इज फजीफिकेशन प्रोसेस? फजीफिकेशन प्रोसेस इज कन्वर्जन ऑफ योर एब्सोल्यूट वैल्यू टू योर मेंबरशिप वैल्यू. तो आपके पास एक कंक्रीट क्रिस्प वैल्यू दी हुई है, आपने उसकी मेंबरशिप वैल्यू निकालनी है इन वेरियस फजी सेट्स ऑफ दैट रिस्पेक्टिव वेरिएबल, राइट जी. सो इज दिस क्लियर? अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो जी, एनीवन? Okay, if there isn't any question then let's move on. अच्छा, देन कम्स फजी इन्फ्रेंसिंग. सो पहला प्रोसेस, पहला जो स्टेप है आपका वो है फजीफिकेशन प्रोसेस. द सेकंड स्टेप that you have to apply is carry out the fuzzy inferencing process. ठीक है, तो फजी इन्फ्रेंसिंग प्रोसेस स्टार्ट हो. और फजी इन्फ्रेंसिंग प्रोसेस में क्या करना है आपने, यू विल हैव टू लुक एट द रूल. सो लेट्स से कि रूल क्या है यहाँ पे. रूल इज गिवन हियर, if the temperature is cold and the given temperature is 15 degrees, that is given as an input, and here you have the a logical operator which is and then it says oil is cheap and it has a membership, it has a value of $13.
So temperature, cold, and oil is cheap are related through this linguistic descriptor or a linguistic or a logical variable and. So temperature and oil are related through and. So the second thing that you'll have to do after finding out the membership values of the given value of temperature and oil, the first thing that you'll have to do it after doing the fuzzification process is to combine these inputs together. And this combination, as given in the rule, is through the AND logical operator. So on one side, you have got the temperature is cold, and then you have the logical operator and on the other side, you have got oil is cheap. So we'll combine these two by doing what? By applying the logical operation on these two variables. And you already know from our previous discussion कि अगर दो linguistic variables आपके पास fuzzy linguistic variables आपके पास आते हैं, and if there is an AND operator between the two, what you'll do? You'll take the minimum of the two, right? And this is what you will be actually doing. The membership value of cold, membership value of cold is 0.5. The membership value of cheap is oil cheap is 0.3, and these are connected through the AND operator. Therefore, you will apply, let's say, the most common AND operator, which is min. You take these two membership values and apply the min operation, or you can use any other, say, operation, your formula, and you apply min. तो यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे आपके पास 0.3 है. Minimum of the two is 0.3. That means that the combined membership value of the left hand side of the rule is 0.3. That's the combined value. Okay? So the combined value of this rule, left hand side of the rule, which is basically combining various inputs together, is given by this value 0.3. ठीक है, because आपने mean operation लगाया यहाँ के, because of this and in the rule. So this is the first step that you'll have to do. अच्छा, अगर यहाँ पे और होता, अगर यहाँ पे and की जगह और होता, तो फिर आप maximum लगाते. इस min की जगह आपको max लगाना पड़ता in that case. ठीक है. Okay. And then what is the next thing in inferencing? The next thing is in inferencing is that you take this combined membership value of your inputs, which is 0.3, and apply an alpha cut operator on your output variable. And what is your output variable? The output variable is heating levels. So let's say कि मेरे पास heating levels जो हैं, वो rule ये कहता है कि if the temperature is cold and oil is cheap, then heating level is high. अब आपने ये देखना है कि रूल में हीटिंग लेवल हाई आपके पास है, कंबाइन इनपुट का मेंबरशिप वैल्यू 0.3 है, तो यू अप्लाई एन अल्फा कट ऑन द मेंबरशिप फंक्शन फॉर हाई हीटिंग. ठीक है. सो अगर मेंबरशिप फंक्शन फॉर हाई हीटिंग इज रिप्रेजेंटेड हेयर, तो इसके ऊपर अल्फा कट 0.3 के ऊपर आपने लगाना है. वाई 0.3? बिकॉज दिस इज द कंबाइंड membership value of your inputs that you have determined in step number 2. तो आपने एक alpha cut लगाया. This red region here is representing, this red region here is actually representing the membership function, the truncated membership function after applying the alpha cut operator. ठीक है. फिर alpha cut operator आप apply कर सकते हैं, या आप consequent या तो आप हॉरिजॉन्टल जैसे ट्रंकेटेड मेंबरशिप फंक्शन इस फॉर्म में भी आ सकता है, या आप ये भी कर सकते हैं कि इस पूरे मेंबरशिप फंक्शन
को जो इंटिसिडेंट या आपके पास जो इनपुट्स की कंबाइंड मेंबरशिप वैल्यू आ रही है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें इस मेंबरशिप फंक्शन के साथ, ठीक है, एंड यू विल गेट दिस रेड रीजन। सो प्रोडक्ट इन्फ्रेंसिंग अगर आप कर रहे हैं तो ये जो लोड डायग्राम है ये आपके पास आएगा, और अगर मिन इन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो आपके पास ये जो अपर डायग्राम है वो आएगा। मिन इन्फ्रेंसिंग का क्या मतलब है, आपने अल्फा कट अप्लाई कर दिया, और प्रोडक्ट इन्फ्रेंसिंग का मतलब ये है कि आपने जो इनपुट कंबाइंड मेंबरशिप वैल्यू है उसके प्रोडक्ट ले लिया आपने अपने आउटपुट लिंग्विस्टिक वेरिएबल। So these two are possible, the possible outcomes। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं, यहाँ इसका मतलब ये है, सो लेट मी जस्ट टेल यू कि इसका मतलब ये है कि आपके पास जो कंबाइंड मेंबरशिप वैल्यू है that would result into heating levels which are represented by this red region here। या ये होगा या ये वाला रेड रीजन होगा, अगर प्रोडक्ट लगाते हैं तो ये वाला रेड रीजन होगा, अदरवाइज ये वाला रेड रेड रीजन होगा। लेकिन यू कैन वेरी इजीली सी हियर कि दिस इज अ ट्रंकेटेड मेंबरशिप फंक्शन, or this is the reduced membership function in case of product। So that means कि आपके पास जो अभी आउटपुट आ रही है heating levels, these heating levels are on this slide, they are representing linguistic description of your output। So this is representing heating is high, heating is high, ठीक है। So what do you think would be the next step, anyone? आपने linguistic description of your output तो निकाल ली, अगला स्टेप क्या हो सकता है? Let me just start by asking someone। जी, Masab, can you let me know कि next step क्या हो सकता है? नॉर्मलाइजेशन से क्या मुराद है? सर आई मीन वैल्यूज़ को नॉर्मलाइज करने का मतलब ये कि हम उसको जो है वो जो वैल्यूज़ हैं उनको मैक्सिमाइज करें ओके, बिटवीन 0 and 1। अच्छा, अच्छा, उसको उसको करने का क्या एडवांटेज हो सकता है? आई मीन व्हाई डू यू वांट टू नॉर्मलाइज इट? सर वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास स्मूथ आएंगी। अच्छा, लेकिन अब देखें, मसला ये है कि मैंने तो ये देखना है कि हीटिंग लेवल्स हाई क्या, यानी लेट से मैंने थर्मोस्टेट सेटिंग को चेंज करना है, तो मैं कंट्रोलर को ये ट्रंकेटेड ट्रायंगल तो नहीं दे सकता, यस और सर, वैल्यूज़ जाएंगी इसको। एक कोई खास वैल्यू चाहिए ना आपको कि थर्मोस्टेट यस सेटिंग आप इसकी ये कर दें। लेकिन यहाँ पे तो आउटपुट जो आ रही है वो तो आपके पास आ रही है प्राइमरीली रेड एरिया, तो पूरा एरिया है, तो कंट्रोलर तो इस तरह से काम नहीं करते। कंट्रोलर अगर मैंने हीटिंग कंट्रोलर अगर यूज करना है तो किसी वैल्यू पे सेट करो। जी समीर, व्हाट डू यू से? हाँ सर, एरिया कैलकुलेट कर लें। हाँ, तो यू विल हैव टू कन्वर्ट दिस fuzzy membership representation of your output to a crisp value, ठीक है। तो यू विल डू एग्जैक्टली दी ऑपोजिट जो कि स्टेप नंबर 1 में आपने किया था। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या किया था? स्टेप नंबर 1 में गिवन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर के अगेंस्ट मेंबरशिप वैल्यू निकाली, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे होंगे, गिवन मेंबरशिप वैल्यू ऑफ हीटिंग इज हाई के अगेंस्ट हीटिंग वैल्यू निकाल रहे होंगे। मेंबरशिप वैल्यू आपको गिवन है हीटिंग की, लेकिन उस मेंबरशिप वैल्यू से आप क्या कर रहे होंगे, एक सिंपल क्रिस्प वैल्यू को का आउटपुट निकाल रहे होंगे। सो इफ आई कुड शो यू हियर, यहाँ पे आपने
15 डिग्री से 0.5 निकाला, राइट। लेकिन जब आपके पास आउटपुट के ऊपर ट्रंकेटेड मेंबरशिप फंक्शन आ गया है, दैट मीन्स कि आपके पास ऑलरेडी ये वैल्यू गिवन है विच इज 0.5 है या 0.3 है या 0.2 है। अब आपने इस ग्राफ के ऊपर उल्टा चलना है। पहले आप इधर से इधर जा रहे थे, अब आप क्या करेंगे कि इधर से इधर आ रहे हो। दिस opposite process of fuzzification is what you call as defuzzification process. So you'll have to do the defuzzification process, and defuzzification process would mean that you'll have to find out a single value, और single value would mean कि आप इस area, ये जो area आपके पास given है, इस area का let's say centroid निकाल लें for example, और ये देखें कि सेंट्रॉइड जो है वो वाई एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच करते हैं। तो लेट्स से कि द सेंटर, I'll just change the pen color here so that you can see। तो फर्ज करें इस एरिया का ये जो रेड रीजन है, सिर्फ उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका सेंट्रॉइड यहाँ पे, ठीक है। तो सेंट्रॉइड में से एक वर्टिकल लाइन पास करें एंड यू विल जस्ट सी कि कहाँ पे वो अपने आप के एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। जिस वैल्यू पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, दैट वुड बी योर आउटपुट, राइट, दैट वुड बी योर आउटपुट। तो लेट्स से कि इस केस के अंदर ये सेंट्रॉइड था, और सेंट्रॉइड में से अगर आपने वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ की, तो दिस वुड कट योर एक्स एक्सिस एट दिस पॉइंट, एंड दिस वैल्यू अगेंस्ट दिस पॉइंट will be your actual output. So this process is what you call as the defuzzification process, right? So in short, there are three things that you will be doing. Number one, you will be doing the fuzzification process for your inputs. The second process would be the inferencing process, and the third process would be the defuzzification process. अच्छा, defuzzification और तरीकों से भी हो सकती है। defuzzification इस तरीके से, so one of the ways is कि आप centroid निकालो given area का, right? दूसरा defuzzification ये हो सकती है कि आप truncated membership function में से जो maximum possible value है वो आप उसका एवरेज ले लें। फॉर एग्जांपल 0.3 जो है वो इस हीटिंग लेवल के लिए भी ये वैल्यू 0.3 है, और इस हीटिंग लेवल के लिए भी वैल्यू 0.3 है। सो यू हैव गॉट दिस वैल्यू एज एन आउट एंड दिस वैल्यू, एंड देन यू कैन टेक द एवरेज ऑफ द, राइट। तो इस वैल्यू और इस वैल्यू का एवरेज आप ले सकते हैं, दैट वुड बी योर आउटपुट। और आप इस रेड एरिया का सेंट्रॉइड निकाल लें और वो देखेंगे वाई एक्स एक्सिस को कहाँ पे वो कट करता है, दैट वुड बी योर हीटिंग लेवल्स। So you will have to convert it back to from a membership function. Now you will have to find out कि ये truncated membership function किस value को represent करता है. This process is called the defuzzification process, right? Now is this thing clear? These three steps are clear? जी, guys, okay. Great. So let's just go through another example, and here is an example of defuzzification. I'll come to that later on. कि ये multiple rules को combine कर रहे हैं, center of gravity and defuzzification process है. But let me just complete this. This schema here is actually representing, or this diagram here is representing the complete process. So you have the fuzzification process, you have the inferencing process, and you have the defuzzification process. तो पहले स्टेप में आप क्या कह रहे हैं कि गिवन टेम्परेचर वैल्यूज के अगेंस्ट आप या गिवन इनपुट्स के अगेंस्ट आप मेंबरशिप वैल्यूज निकालते हैं, दैट इज फजिफिकेशन प्रोसेस। देन यू गो फॉर द इन्फ्रेंसिंग प्रोसेस। दैट मीन्स कि अगर इन्फ्रेंसिंग प्रोसेस आपने अप्लाई करना है, यू विल फाइंड आउट इन योर रूल बेस कि कौन कौन से रूल्स ऐसे हैं जो कि एप्लीकेबल हैं, और उन रूल्स एप्लीकेबल रूल्स के जो लेफ्ट हैंड साइड्स हैं, दैट मीन्स जो इनपुट्स हैं, उनकी मेंबरशिप वैल्यूज को आपने कंबाइन करके सिंगल मेंबरशिप वैल्यू लेनी, व्हिच इज this is what you call as the inferencing process।
तो आपने इनपुट्स को कंबाइन करके सिंगल मेंबरशिप वैल्यू लेनी है फॉर एवरी रूल दैट इज प्रेजेंट और दैट इज एप्लीकेबल और दैट इज फाइन, ठीक है। तो इन्फ्रेंसिंग के बाद डीफजिफिकेशन प्रोसेस एंड डीफजिफिकेशन प्रोसेस के अंदर फॉर अ गिवन मेंबरशिप वैल्यू यू विल हैव टू डिटरमिन अ क्रिस्प वैल्यू फॉर योर आउटपुट। तो इनपुट्स को फजीफाई कर रहे होंगे, आउटपुट को डीफजीफाई कर रहे होंगे, और डीफजिफिकेशन के लिए आपको मेंबरशिप वैल्यू चाहिए फॉर योर आउटपुट, और वो मेंबरशिप वैल्यू फॉर योर आउटपुट कम्स फ्रॉम द इन्फ्रेंसिंग प्रोसेस, ठीक है जी। ओके, so let's just see. So this is the complete process. You have a rule set. आपके पास क्रिस्प इनपुट्स आ रही, आपने उनको फजीफाई किया थ्रू अ फजीफायर, और फजी इनपुट सेट्स आपके पास आ गए। Those fuzzy input sets would move into your inferencing model, which is represented here by intelligence. और वो इनपुट आपके पास उसमें दो तरह की इनपुट्स आ रही होंगी, एक तो रूल सेट आपका इनपुट होगा और दूसरा आपके फजीफाइड इनपुट्स आपकी होंगी। इन दोनों को यूज करते हुए यू विल हैव टू कम अप विद अ कंबाइंड मेंबरशिप वैल्यू ऑफ योर इनपुट्स against all possible rules that can be fired. और पॉसिबल रूल जो कि फायर करेंगे वो क्या है? इफ यू रिमेंबर कि वर्किंग मेमोरी के अंदर हम क्या करते थे, आप फैक्ट्स को मैच करते थे रूल्स के साथ, और आप देखते थे कि कौन सी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो जो सी कंडीशंस फुलफिल होती थी आप सिर्फ वही रूल्स फायर करते थे। तो हेयर अगेन यू विल फाइंड आउट कि कौन कौन से रूल्स फायर होंगे, और उनको आप रूल्स को आइडेंटिफाई करेंगे एंड यू विल कम अप विद अ फजी आउटपुट, और फिर उस फजी आउटपुट को आपने डीफजीफाई करके क्रिस्प आउटपुट पे कन्वर्ट करना। अच्छा, इस केस में और स्टैंडर्ड एक्सपर्ट सिस्टम रूल्स के अंदर जो बेसिक फर्क है ना, एक तो ये प्रोसेस का फर्क है, फजीफायर आ गया और डीफजीफायर आ गया और रीजनिंग प्रोसेस चेंज हो गया। एक तो ये इसके मैकेनिज्म में फर्क। दूसरा एक मेजर फर्क और भी है, और वो ये है कि इस केस के अंदर जो कि फजी रूल बेस्ड सिस्टम्स के अंदर है, यू कैन फायर मल्टीपल रूल्स एट अ टाइम, मल्टीपल रूल्स एट अ टाइम यू कैन फायर। वेयर एज इन द प्रीवियस केस आप सिक्वेंशली रूल्स को फायर करते हैं, यहाँ पे सिक्वेंशली रूल्स आप फायर नहीं कर, यहाँ पे तमाम रूल्स को आप एक ही वक्त पे फायर कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज what you call as the complete fuzzy inferencing process, fuzzy rule based inferencing process, right? The fuzzy rule based inferencing process जो है, this is what we call as a fuzzy rule based. So let me just show you an example before we move on. I'll just show you an example. I'll stop screen sharing and I'll just open another set of slides जहाँ पे मैं ये complete cycle आपको दिखा सकूँ। Okay,